छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। हुए गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। सा सा ग प ग रे सा रे ग रे ग प ध प सा सा ग प ग रे सा रे ग रे ग प ध प ग ग प र सा ध सा सा रे ग रे सा ध सा ग ग प र सा ध सा सा रे ग रे सा ध सा सा ग रे ग रे सा ध सा प सा ध सा ध प ग प सा ग रे ग रे सा ध सा प सा ध सा ध प ग प सा सा ग प ग रे सा रे ग सा सा ग प ग रे सा रे ग सा सा ग प ग रे सा रे ग। घर आंगन वन उपवन उपवन करती ज्योति अमृत के सिंचन। घर आंगन वन उपवन उपवन करती ज्योति अमृत के सिंचन। मंगल घट ढल के, मंगल घट ढल के, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। उषा ने आंचल फैलाया, फैली सुख की शीतल छाया। उषा ने आंचल फैलाया, फैली सुख की शीतल छाया। नीचे आंचल के, नीचे आंचल के, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। ग रे ग प ध ध ग ध ध प ग रे सा, पग पद सा सा ध प ग रे सा ध सा रे ग ग सा ग रे रे सा ध सा सा ध सा प ध सा ग प ध सा रे ग प ध सा सा रे ग प ध सा रे रे ग ग सा सा रे ग सा प ध ग प रे ग सा रे ग सा 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 रे ग सा प ध ग प रे ग सा रे ग सा 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 रे ग सा प ध ग प रे ग सा रे ग सा। पात पात बिरवा हरियाला, धरती का मुख हुआ उजाला। पात पात बिरवा हरियाला, धरती का मुख हुआ उजाला। सच सपने कल के, सच सपने कल के, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। हुए गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के, ज्योति कलश छलके,
ज्योति कलश चल के, ज्योति कलश चल के। Difficult roads often leads to beautiful destinations. So never give up and strive to achieve your goals. Namaste and a very good morning to everyone. I, Ivy Tilwa, welcome you all to our morning assembly on TGES Live. Today is 17th July 2020, Friday. અને ગુજરાતી તિથિ પ્રમાણે આજે અષાઢ વદ બારસ છે. Prayers is the cure of a confused mind, a weary soul and a broken heart. So let's join our hands and close our eyes and make the best out of today's prayers. तेरी वीणा की बंजाऊं तार, तेरी वीणा की बंजाऊं तार, ऐसा दे मुझको माँ वरदान, ऐसा दे मुझको माँ वरदान। पूरे विश्व में जो कलादायिनी, कमल नयनी, हंस वाहिनी के रूप से जाना जाती है, वो माँ सरस्वती के चरणों में हमारा शत शत नमन। माँ सरस्वती जो हमारे अज्ञानता के अंधेरों को दूर कर हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाती है। आज हमारी प्रार्थना में भी हम माँ सरस्वती को अपनी ओर ज्ञान का प्रकाश लाने की विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आइए हम भी साथ मिलकर माँ सरस्वती को अपने जीवन में ज्योति का प्रकाश लाने की विनती करें। हे शारदे माँ शारदे, हे शारदे माँ शारदे, अज्ञानता से हमें तार दे, अज्ञानता से हमें तार दे। हे शारदे माँ शारदे, हे शारदे माँ शारदे। तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, तू स्वर की देवी,
संगीत तुझसे हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, शिक्षा का हमारा अधिकार दे। हे शारदे माँ शारदे, हे शारदे माँ शारदे, अज्ञानता से हमें तार दे, अज्ञानता से हमें तार दे, हमें तार दे, हमें तार दे, हमें तार दे, हमें तार दे। Our today's performers are Siddhi Pabari, Shrija Makwana, Heer Nindrona and Tanusha Poptani. पैसे बिस्तर दे सकता है, नींद नहीं। पैसे भोजन दे सकता है, भूख नहीं। पैसे अच्छे कपड़े दे सकता है, सुंदरता नहीं। पैसे ऐशो आरामों के साधन दे सकता है, सुकून नहीं। ऐसे ही कुछ विचार प्रस्तुत करने आ रही है सिद्धि पबारी। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धि पबारी। मैं कक्षा 8 से हूँ। मेरी रुचियाँ नई चीज़ें जानने में है और गाना गाने में है। मैं आज आपके सामने जीवन सिर्फ पैसा नहीं है कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ। जीवन सिर्फ पैसा नहीं है। जीवन में हमारे लिए केवल अच्छे शैक्षणिक योग्यता या अच्छा कैरियर ही बहुत कुछ नहीं है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम एक स्वस्थ, सफल और संतुलित जिंदगी जिएं। संतुलित जीवन का मतलब है स्वास्थ्य, लोगों से जो संबंध, मन की शांति, सब कुछ अच्छा और संतुलित होना चाहिए। केवल पैसा और शौहरत कमाना ही बहुत कुछ नहीं है। सोचिए, जब आपकी पीठ में दर्द हो और आपको कार जाने के लिए जाना हो तो आपको कोई मज़ा नहीं आएगा। जब आपके दिमाग में टेंशन हो और आपको शॉपिंग करने के लिए जाना हो तो आपको कोई आनंद नहीं आएगा। ये जीवन आपका है, ऐसे ज़्यादा गंभीर मत बनाइए। हम सब इस दुनिया के सफ़र में कुछ पल के मेहमान हैं, इसीलिए जीवन का आनंद लीजिए और इसे ज़्यादा गंभीर मत बनाइए। हम सब इस दुनिया में केवल एक मोबाइल के रिचार्ज की तरह है जो अपनी वैलिडिटी के बाद समाप्त हो जाएगा। हमारी भी वैलिडिटी है और भाग्य के साथ या तो कम से कम 50 साल तो जिएंगे ही। और इन 50 सालों में 24 वीकेंड होते हैं।
क्या तब भी हमें केवल काम ही काम करने की ज़रूरत है? जीवन को इतना भी कठिन मत बनाइए कि खुशी आपसे बहुत दूर चली जाए। ठीक है, कभी कभी क्लास बंक करना, किसी एग्ज़ाम में कम मार्क्स लाना या छोटे भाई बहनों से झगड़ना, ठीक है, चलता है, ज़िंदगी का पार्ट है। जब हम जिंदगी के आखिरी पड़ाव में होंगे तो यही छोटी छोटी बातें हमें हंसाएंगी, गुदगुदाएंगी, ना कि ऑफिस की प्रमोशन या 24 घंटे लगातार काम। ये सब उस दिन कुछ मायने नहीं रखेगा। हम इंसान हैं, कोई मशीन नहीं। हम इंसान हैं, कोई मशीन नहीं। इसीलिए जीवन का आनंद लीजिए और इसे ज़्यादा गंभीर मत बनाइए। धन्यवाद। Does anyone have pets? Yes, those cute, funny and playful animals. If you do have one, you will never be bored in your quarantine life. Our next performer is a great pet lover. I invite Shrija Makwana to present a show and tell on her pet. Hello everyone and good morning. Today, I, Shrija Makwana from the Galaxy School Valley, is going to share about my pet cat, Silver. She's a Persian breed. We bought her on 15 December 2019. She is quiet and sweet, fun-loving when active, but sleeps for 17 to 18 hours. Yeah, you heard that correct, 17 to 18 hours. Oh, and that reminds me that a wonder is attached to her, and that's her tail. Do you know? She cuddles it and rotates around it as if she's catching it. She loves to play with papers, and it's a joy of sight to watch, sharpening her prey-catching skills. She rockets around and leaps as if she's catching flying birds. Every morning goes active and running and paw dancing with her. She gets irritated with high-pitched sounds. Be aware, if you pat her on her tummy, she might even scratch you. She enjoys and relishes her food of candies and kitty salsa. If given a command to come around, she will immediately respond. She purrs, meows, and shows many other sounds in showing caring gestures. At this time, we call her Silvera. I enjoy my stay-home time in this pandemic situation of COVID-19 as she's around. Thank you. It was my pleasure to share about my pet cat, Silver. Bye! Why walk when one can dance? Yes, our next performance is a dance by Hemendra Rora on the song Mukabla.
enjoy her graceful dance. Got the sun and the sand and the sea and the night, and we're feeling alright. Yeah, we're feeling alright. क्यों लम्हे खराब करे, आ गलती बेहिसाब करे, दो पल की जो नींद उड़ी, आ पूरे सारे ख्वाब करे। क्या करने हैं उम्रों के वादे, ये जो रहते हैं रहने दे आधे। दो बार नहीं एक बार सही, एक रात की कर ले तू यारी। सुबह तक मान के मेरी बात, तू ऐसे जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। छोड़ के सारे शर्म और लाज, वैसे जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए मेरा भारत महान है. Let's pay tribute to our mother nation by rising up for the national anthem. Assembly, Saudhan. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। असेंबली विश्राम। जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया. So let's have a smile on our face and battle the hardships of our lives. I would like to invite our respected Kiran sir to share a few words. Thank you. Today's point to Socho is about exercise and the contradictions surrounding exercise. In our training programs, at the beginning, as a sort of icebreaker and as a wake-up call, we ask all the participants that how many of you think it is important to exercise? Now the answer to that question is almost invariably everybody raises their hand. We ask them to raise their left hand if they think it is important to exercise. And so everybody raises their left hand. Then we ask them, how many of you exercise? Raise your right hand. And surprise, surprise, surprise. Less than 25% of people are actually honestly able to raise their right hand. So what happens? What gives here? Why is it that we all think it's important to exercise but so few of us do? Jara socho. I would like to thank our music team and tech team for their enormous efforts to make this assembly possible even in this trying situation. I would like to invite the music team for their melodious exit song. Stay home, stay safe. नमस्ते,
પ્રસ્તુત પ્રાર્થના ઓ શારદા તું આવ મારા જીવનમાં. માં સરસ્વતીને આપણા જીવનમાં જીવન સાથે પલ પલ હર ક્ષણ સાથે રહેવાનું, સંભાળી લેવાનું, તેમની કૃપા અને આશીર્વાદ સાથે આપણા જીવનમાં આવવાનું એક હૃદયપૂર્વકનું નિવેદન, એક આમંત્રણ છે. હે માં સરસ્વતી, તમે અમારી વાણીમાં સદવાક્યો સ્વરૂપે અને સુમધુર ગીત સ્વરૂપે, અમારા વર્તનમાં સદવર્તન સારા કાર્યો સ્વરૂપે, અમારા નર્તનમાં નટરાજ સ્વરૂપે અને અમારા કીર્તનમાં સંગીત સ્વરૂપે હંમેશા બિરાજમાન રહો. હે માં, અમારા જીવનની વસંતમાં મોર થઈ છવાજો. અમારા કંઠમાં તમારી વીણાના સૂરો રેલાવજો. હે માં, અમારા હૃદય વિશાળ અને મોટા બનાવજો, જેથી અમે આ સૃષ્ટિની સઘળી સારાઈઓ અમારી અંદર સમાવી શકીએ. શારદા તું આવ મારા જીવનમાં. ઓ શારદા તું આવ મારા જીવનમાં. વાણીમાં વર્તનમાં નર્તનમાં મુજ કીર્તનમાં ઓ શારદા. વાણીમાં વર્તનમાં નર્તનમાં મુજ કીર્તનમાં ઓ શારદા. ઓ શારદા તું આવ મારા જીવનમાં. છવાજે મુજ જીવન વસંતમાં. મોર થઈ છવાજે મુજ જીવન વસંતમાં. વીણાના સૂરો વહાવ મારા કંઠમાં. વીણાના સૂરો વહાવ મારા કંઠમાં. ઈશતણા ગીત દેજે અંતરમાં. હો ઈશતણા ગીત દેજે અંતરમાં. વાણીમાં વર્તનમાં નર્તનમાં મુજ કીર્તનમાં ઓ શારદા. વાણીમાં વર્તનમાં નર્તનમાં મુજ કીર્તનમાં ઓ શારદા. ઓ શારદા તું આવ મારા જીવનમાં. જગના આંગણમાં નાચું મોરલો બનીને તારો. જગના આંગણમાં નાચું મોરલો બનીને તારો. વિશ્વ પર છવાઈ જાઓ ઈશના બની વિચારો. વિશ્વ પર છવાઈ જાઓ ઈશના બની વિચારો. ભરજે વિશાળતા પુર અંબરમાં. ભરજે વિશાળતા ઉર અંબરમાં.
વાણીમાં વર્તનમાં નર્તનમાં મુજ કીર્તનમાં ઓ શારદા વાણીમાં વર્તનમાં નર્તનમાં મુજ કીર્તનમાં ઓ શારદા ઓ શારદા તું આવ મારા જીવનમાં ઓ શારદા તું આવ મારા જીવનમાં વાણીમાં વર્તનમાં નર્તનમાં મુજ કીર્તનમાં ઓ શારદા વાણીમાં વર્તનમાં નર્તનમાં મુજ કીર્તનમાં ઓ શારદા ઓ શારદા તું આવ મારા જીવનમાં ઓ શારદા તું આવ મારા જીવનમાં ઓ શારદા તું આવ મારા જીવનમાં